Hi you guys, welcome back to my channel, and if you're new to this channel and watching my face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion DIY videos. So in today's video I am going to style clay rings. मतलब मेरे recent video में I have DIYed clay rings, तो ये ही DIY को अब I'm going to style. Actually वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो I just don't want to include the styling and the DIY part together कि DIY पार्ट ऑलरेडी काफ़ी लंबा है. मेरे काफ़ी सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स थे और मैंने क्या क्या गलती करी है और क्या क्या कैसे कितनी बार, आई गेस मैं 4 बार फेल हुई हूँ एंड 5th वॉज माई फाइनल अटेम्प्ट जिसमें मैं पास हुई थी. सो all the mistakes and the final product, everything is in the other video. Please go check it out. मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. आई डोंट नो, मैं ये लिंक और डिस्क्रिप्शन में हमेशा उटपटांग बोलती हूँ, बट एनीवेज let's forget this and let's get into the video. Let's style those rings, those crazy colorful rings, and let's just style them. I'm so excited to style them, but those crazy colorful rings are so damn tough to style. But I tried my ways, which are very basic and कुछ भी over the top नहीं है. मतलब एक्सेप्ट द रिंग्स, मतलब रिंग्स हैं ही ओवर द टॉप, इसलिए मैंने चीज़ें काफ़ी बेसिक रखी हैं, बट चीज़ें सारी ट्रेंडी हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हैं. स्टिल वेरी बेसिक, नॉट टू मच. मतलब कहीं आप वो चीज़ें पहन के जाओगे कुछ टू मच नहीं लगने वाला है, बस टू मच आपकी रिंग्स लगने वाली हैं. बट इफ़ यू आर इन टू क्लियर रिंग्स, जस्ट गो फॉर इट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो. तो बिफोर स्टार्टिंग जस्ट वांट टू से, अगर आपको ये चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो अगर आपको सुनाई दे रही है, प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज आई कांट हेल्प इट एंड मुझे वीडियो तो बनानी है, तो अब ये है. सो एनीवेज, लेट्स गेट इन द वीडियो. सो द फर्स्ट स्टाइल इज this basic crop top. So crop top and these ribbed kind of material crop top are so damn in trend. So I was looking for really colorful crop top, and then I found this one. Like I got this from Amazon, and this gave the total 90s and Y2K vibe, जिसके साथ ये rings perfectly match हो रही हैं. For styling part, मैंने इसके साथ रिंग्स के साथ मैंने एक ये नेक पीस भी ऑर्डर करा था. आई गॉट दिस नेक पीस फ्रॉम मिंत्रा, एंड ये आजकल कलरफुल नेक पीस बहुत चल रहे हैं. This is totally 90s vibe. मतलब I can imagine myself as a kid wearing this with some beads in my hair, and that's how my mom used to style me. I'm a total 90s kid. My mom used to make me wear all these colorful pins and beads and everything. So for styling parts, for pants, for bottoms, I wore these blue denim. काफ़ी basic look था. Joggers would have looked perfect. I mean, I also do not have joggers, so I paired this with blue denim, but blue denim worked, I guess, and white shoes, it killed it. Blue denim, crop top, and white sneakers, and those beaded neck piece, and those chunky, huge rings, and I loved it. मतलब काफ़ी ही 90s vibe and Y2K aesthetic आ रहा था. I loved it. So that was the first look. For second look, I went ahead with a white dress. I know this is not the kind of Y2K kind of thing, but I really like the vintage in the 80s and 90s vibe with the ruffle thing going on the sleeves and everything. And I really like the maxi dress क्योंकि काफ़ी comfortable होती है. ये बहुत comfortable है. With the entire, it is a little loose, and I prefer it that way because इतनी गर्मी में फिटेड चीज़ें नहीं हैंडल हो पाती हैं. सो इट्स परफेक्ट फॉर समर्स, वाइट है समर्स प्लस लिटिल लूज. एंड इसको मैंने थोड़ा सा कलर्स ऐड करने के लिए आई एडेड ऑल दोज एलिमेंट्स. द एग्जैक्ट सेम बीडेड नेक पीस मैंने अपने हर लुक के साथ पहना है, अलॉन्ग विद दोज चंकी, आई मीन रिंग्स को तो हम स्टाइल कर रहे थे, तो मैंने रिंग्स भी इंक्लूड करी हैं. सो ये काफ़ी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, ये पूरा आपका लुक चेंज कर देते हैं. इस ड्रेस की वाइट प्लेन ड्रेस का इसका कलर ऐड करना बहुत ज़रूरी था. प्लस उसको मैंने अपने फ्लैट्स के साथ पहना था. आई गेस वो वीडियो फ्लैट्स नहीं थे, काफ़ी कलरफुल एंड गो एंड वाइब के फ्लैट्स से ये विद रफल्स एंड कलर्स एंड फ्लोरल थिंग गोइंग ऑन ऑल ओवर. सो आई लव दिस कि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन परफेक्ट लग रहा था. मतलब काफ़ी समर अप्रोप्रिएट, कंफर्टेबल एट इट्स पीक, मतलब कंफर्टेबल टू द जेड वाला कंफर्टेबल था.
plus stylish. It was super stylish, super comfortable, super से ऊपर वाला look था ये मेरे लिए तो. So for third and the last look, I बहुत ही कैजुअल वाइब चाहिए थी मुझे, तो मैंने वही सेम डेनिम के साथ वाइट टैंक टॉप पेयर अप करा और उसके बाद मैंने पॉपी पिंक कलर की शर्ट पहनी. आजकल दीज ब्राइट कलर्स आर सो इन ट्रेंड, मतलब bright pink, bright green, bright yellow, bright orange, all these colors are so damn in trend, and I got this shirt. And this is a oversized men's shirt. मतलब मैंने obviously आपको ज़ारा में और ऐसे में मिल जाती है, but वो 1500 के अराउंड मिलती है, and I got this for 600. So it is always a win-win situation. आप जितना आप सर्च करके cheapest thing निकाल दो is always a win-win situation. So yes, that's that. So ये पिंक शर्ट जो कि किल कर रही है, which I can also pair with in million other ways, and I paired this with the same neck piece and same obviously the rings ही तो स्टाइल हो रही हैं, तो rings तो same ही रहेंगी. And I wore this with white sneakers, and the white sneakers completed the look, and काफी comfortable casual kind of a vibe is going on. The pink shirt is also very comfortable, मतलब बहुत मैंने उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए वाइट टैंक टॉप पहनना है. आप बिना टैंक टॉप के पहन सकते हो, बट आई गेस वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है. ओवरसाइज शर्ट होती है, नीचे भी थोड़ा लूज पैंट्स होते हैं, तो थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए यू आर सपोज टू वेयर समथिंग लिटिल फिटेड underneath or something. So this is how I'm going to style. So these are the 3 looks that I've created for the Y2K and the 90s trend with the clay rings. The making of clay rings was so satisfying. I mean, you can do this with your kids, niece, nephews and whosoever, friends and cousins. जो भी है सबके साथ आप ये कर सकते हो. बहुत ही फन एक्टिविटी है, प्लस वेरी सेटिस्फाइंग. Creating new things are always very satisfying and very calming. So you should definitely try making these, and it's fun to style these also. बहुत ही यूनिक लुक देती हैं, पूरे कलरफुल वाइब, प्लस समर है तो कलर्स ऐड करने ही होते हैं हमें समर्स में. एंड आई ऑल्सो लिंक्ड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. यार एक तो ये स्टेटमेंट बोलना मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि मैं हमेशा इसमें मैसअप करती हूँ. आई गेस मैंने इस बार सही बोला है कि मैंने हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. I hope I am correct this time. Also, if you want more such videos, styling videos, please do tell me in the comment section so that I can make a lot more such videos. And if you guys like this video, please don't forget to like, share, comment and subscribe. I mean, please subscribe कर दो यार. Please help me grow, and please कर दो subscribe. Until next time, bye bye.